प्रोफैसर डॉक्टर रुपिंदर कौर जी पूछ चुके हैं। मैं उन्होंने इतने पुजन से उन्होंने चीरा भी करता हाँ। और जी मैडम आज पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफैसर, जिंदगी का बड़ा लंबा तजर्बा, गुरु घर नाल जुड़े हुए विरसे दे गुड़ती दे विच ये सिक्खी मिली है किवें असी गुरसिख जीवन बितांदे होया असी ऊपर उठ सकते हैं। साढ़े की एथिक्स होने चाहिए एज ए प्रोफैशनल। ये सारियां गल्लां ये अपनी विद्वता तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर करेंगे। मैं बहुता समा नहीं लैता, मैं इन्हों डायरैक्टली सत्ता दे रहा कि आओ जी डॉक्टर रुपिंदर कौर जी तो बच्चों के रूबरू होवो तो गल करो प्रोफैशनल एथिक्स की। डॉक्टर रुपिंदर कौर जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला तो मैं सुलूजा सर को एक रिक्वेस्ट करनी है। सर नेक्स्ट टाइम आई थिंक आई डिजर्व टू बी ऑन दैट साइड, बिकॉज इन फ्रंट ऑफ यू नो इतने सारे वो बुद्धिजीवी इतने बैठे हुए हैं एंड आई फाइंड माई सेल्फ जस्ट अ चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ देम सीरियसली। और मैं कोई बहुत इलैबोरेटिव लंबा चौड़ा लेक्चर लेके भी नहीं आई। मेरे बहुत अच्छा लगता है बच्चों के नाल इंटरैक्ट करना जिन्होंने स्कॉलरशिप मिलती है ट्रस्ट वालों और मेहनत कर रहे हैं और अपनी लाइफ च एक गोल लेके चल के अगो सक्सैसफुल होना चाह रहे हैं। सो आई रियली फील प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड टू इंटरैक्ट विद ऑल ऑफ यू। और थोड़ी बहुत इंग्लिश सारे समझ रहे हैं ना। मैं आई फाइंड ऑल ऑफ यू आर नोइंग जो सर समझा रहे थे, सो दैट इज रियली गुड। केड़ी क्लास इत्थे मेनली हैगी है ज्यादा डिफरेंट फील्ड्स फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ओके quite mature enough, good, that is good. So मैं ज़्यादातर बेटा I want you people to interact with me. This is what I like more. सिर्फ lecturing ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, lecture भी सुनना ही है आपा, but when we interact I would like you to you know share some thoughts because मैंने मेरी की अप्रोच है, मैं एक पढ़ाई हुई है अपनी लाइफ learning from each other, Leo approach. Okay, I have created this approach कि we always learn from each other. It's not that one can make other learn. ठीक है, तो एक बहुत अच्छा सुलूजा सर ने हमने लास्ट एंड अप किया है SWOT analysis. All of you are aware of SWOT analysis? तो जो जिन्हों पता है SWOT analysis ना? Okay, so SWOT analysis आज आप करांगे अपना okay, but before that I will explain what it is. मैंने सर ने प्रोफेशनल एथिक्स किया है, तो मैं थोड़ा जो हट के मैं वर्चुअस वर्क लाइफ के ऊपर थोड़ा डिस्कस करूंगी as leading a virtuous life which automatically includes ethics in it. Okay, सब तो पहला तो अपना ये सवाल आता ही है what is life. कई बार अपन आ जाते हैं ना, so what is life? Any one of you, if anyone can say anything about what is life, you think? You people are mature enough to answer. कोई भी खुल के प्लीज बोलो, I would love to interact. ਆਪਾਂ जो बहुत ऐसा के बच्चे थे बैठे हैं जिन्हें अंदरों कहना चाह रहे हैं पर they don't have the courage to stand up. I know. कोई नहीं, मैं भी ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸੀ शुरू ਤੋਂ, कोई ਗੱਲ नहीं. I understand. जे कोई भी कुछ भी कहना चाह रहे हैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ what is life? Isn't what we if we get an opportunity? हाँ जी कोई बोल रहा है? Okay, कोई गल नहीं. You will ultimately start. एक exercise करते हैं पहला आप. All of you have pen and paper with you? अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ?
डॉट लगाओ, दिख रहा है मेरा पेज, इस तरह डॉट्स लगा लो। Yes, yes. You know about this game? Yes, yes. 9 dots. किन्हों पता है इसका solution? Okay, चुप रहना फिर, ठीक है? Okay. So now, what all of you have to do is, ये सारे dots आपका join करने हैं with 4 lines without picking up your pen. पेन नहीं चकना, लगातार एंजन जाना चाहिए और 4 स्ट्रेट लाइंस बनानी है जिसदे नाल सारे डॉट्स ज्वाइन होने चाहिए हैं, कोई डॉट खाली ना रहे। You can try for 2-3 minutes. I'll not waste much of time. फिर सानू बेटा ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ? सागर. सागर will tell us the solution. पर पहला नहीं, no, don't sleep it. एक पहला नहीं, solution बाद। First you have to try. किसी को कोई solution मिल रहा है which? मिल रहा है? Please raise your hand. 4 straight lines, no 5th line. This is like, you know, we have constraints in life. This is how I am now, thoda ja mainu naal naal to explain karte jaungi. These are certain constraints in life. ठीक है? And we are not able to find the solution. And where are we stuck is, कि तुसी इन्हां 9 dots ਨੂੰ एक square लेके चल रहे हो, है ना? You are taking these 9 dots as square. This is not a square. मैं तो किया ही नहीं है square है, तुसी खुद ही मैंने दसता सी these are 9 dots. So these are 9 dots, not a square. That means we have to move beyond it. There might be a solution moving beyond it. I hope you are trying to understand what I want to say. This is life, and constraint is it has a designed figure. मैंने दिती है 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐ देती मैंने, even मिली है. That is a constraint. That is my constraint. And now मैं लेके बैठी रहूँगी कि इधर सब हो ही नहीं सकता. This is impossible, है ना? We normally say this is impossible, and we just get away with it. This is impossible. But there are solutions. We have to be positive. और solution किथों आना ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ creative thinking भी देनी है. We have to move beyond. ਅਸੀਂ सोच कुछ हो रहे हैं कि square है. We are getting stuck in something which is not there. ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣਾ? ਸਾਗਰ will explain us. ਇੱਥੇ ਹੀ draw करके ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇਹਦਾ solution ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣਾ. How will we draw 4 straight lines with these 9 dots? हम सब तो पहले एक डायगोनल लाइन जिससे 10 डॉट्स कवर हो जाएंगे, उस तो बाद एक स्ट्रेट लाइन बट इनको एक्सटेंड करना है आगे तक, लाइक फॉरवर्ड जिथे तक भी जा सकते हैं आप. उस तो बाद उस लाइन में अगर इतने तक हैगी है उस लाइन में स्ट्रेट लेके आना है जिससे 2 स्क्वायर्स भी कवर हो जाएंगे. एंड देन इन्होंने आगे तक सॉरी दीज 2 देन इन्होंने आगे तक एक्सटेंड करके जा सकता है और उस लाइन में स्ट्रेट लेके आना है. तो इट्स लाइक अ ट्रायंगल फॉर्म होएगा बट एक्सटेंड ये दोनों डॉट्स तो बजाय एक्सटेंड होएगा आगे. हमें हो सकता है तो ना समझ आए, ठीक है? दिस इज शॉर्ट टाइम, पर ये तुसी आज समझ लेनी है. You will not believe it, I know. ठीक है? The thing is, what I want you to understand is that there is a solution, but that we have to remain positive about it. बहुत जरूरी गल है सब तो पहले. Now बैठो बेटा, please. Thank you. ठीक है? So एक बार तो हमें solution आ गया, then what happens?
we get mature enough to handle another situation. Now come back from this exercise. You will learn it later on. Hanji beta? Okay, you will do it later. Don't talk. Okay. So the thing is, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ if this is life and if this is full of constraints like this, we don't have to get stuck in what we think. We need to move beyond. ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? We need to learn more. We will learn and then we will, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ learn ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ move beyond ਕਰ ਗਏ, ਇੱਕ solution ਆ ਗਿਆ, then you will move to another solutions and gradually you will find out, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ yes, there is a solution to most of the problems. ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ. So this is how we keep on moving. So starting with what is life? Is this just कि ਸਾਨੂੰ एक opportunity मिली है, we are breathing and then one day we will lose this opportunity? Is this the time between this and this? If this is life, or it is something more in it? What do you think? Something more. All of us are understanding this thing that life is something what we make out of it. ਜਿਹੜਾ time ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, that is fixed. That is not in our hands. ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? What we make out of it is life. And here, comes the reason why we should lead a virtuous and ethical life. ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਕ virtues ਨੂੰ learn ਕਰਨ ਦੀ? We can have everything, but whatever we want to do, we can do in our life. ਕੌਣ ਹੈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਦੇ thought. But then we need to understand the difference between the two. What virtuous life is going to give me, I am definitely going to lose in the other one. And what is that? Can you just try to name? You are mature enough. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ virtuous ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? Virtues, good virtues, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, merits, ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛੇ virtues ਹੈ, ethics ਹੈ. I will name a few after this. We will discuss a few rather, not just name. तो वो लाइफ ਸਾਨੂੰ क्यों जरूरी है? Maybe एक गल याद रखना, virtuous life is hard as compared to the other one. शुरुआत में, initially, ਇਹ ज़्यादा joyous लगती है, मजेदार है ना? Enjoying. Virtuous life might be challenging, might be little hard, but then we have to follow. We follow. Why? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿਉਂ ਜੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੁਝ ਵੀ anything you come out with. Why we should lead a virtuous life? Write this as a question and you have to answer it for yourself. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਊਂਗੀ ਜੋ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਥਰੂ, but then you have to answer it for yourself also. Why you will be leading a virtuous life and not the other one? देखो मोटा दो तीन चीज़ां सब तो इम्पोर्टेंट ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, यूनिवर्सल ट्रूथ है. This life will give you more peace, more contentment in life, a healthy life, a happy life. Here initially you will find so many things, but finally you will lose all of them. मैं सिर्फ 3-4 नाम ले हैं, वैसे जब तुसी इलैबोरेट करना चाहोगे अपनी लाइफ जो सानू बड़े आंसर्स मिलते हैं जो मैंने नहीं पता. You know your life better, right? So virtuous versus non-virtuous life, of course we'll choose this one because of the reasons. ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਆਪਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਪਰ ਕਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਚੂਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਚੂਜ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ?
तो गुरबाणी विच सारे वर्चुअस जेडे गुड वर्चुअस विल टॉक अबाउट जस्ट फ्यू ऑफ देम, बहुत सारे ने, बट वो सारे दे सारे सानू बाणी पढ़न दे नाल ही और सिर्फ मिलते सानू समझ ही नहीं आती. इट्स नॉट दैट वी जस्ट लर्न देम, वी आर एबल टू implement, grab them finally in our life. वो किसी कृपा ना, गुरु दी कृपा नाल ही साडे कोल आप नहीं कुछ इन्ना असी कर सकते. ह्यूमन बीइंग यू नो इज स्टिल ਅਸੀਂ ਯੂ نو ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਉਹਦੇ ਹੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਲੋਕਸ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਲਸੋ ਗਿਵਸ ਅਸ ਪੀਸ ਐਂਡ ਹੈਪੀਨੈਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੁੱਡ. ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਰਚੂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਨੀ ਆਫ ਯੂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਰਚੂ ਦੱਸੋ, कोई चीज. आई विल स्टार्ट विद वन, बाकी तुसी मैनू एक करके कोई कोशिश करो दसो. पहली चीज, ट्रुथ इज द बिगेस्ट वर्च्यू. एक लाइन बोल देती है, हुण सच की गल कर लेते हैं. ठीक है, सच के कितने एस्पेक्ट्स ने, सच बोलना ना, झूठ नहीं बोलना किते. हुण दैन इट अगेन इट इज हार्ड. मैं कहना हर एक वर्च्यू च एक चैलेंज आऊगा. कई बार सच बोलने के नाल बहुत बड़ा चैलेंज है, झूठ बोलने नाल काम सौखा निबड़ जाना सी. अंदर होता है, this happens in life, but then what path we have to choose, that is in our hand. वो चीज साढ़े हाथ चाहिए, the path we choose actually. ठीक है, these are the crossroads. इनको कहते हैं crossroads in life, where we will find multiple paths, basically two paths, the right and the wrong one. And then this is very hard and challenging, this is the easier path, and when we have to choose between that. And we find ourselves in crossroads at हर लाइफ के हर एंगल से तुहानू एक crossroad मिलता है. ठीक है, सो उत्थे सानू ये चीज याद रखनी है that yes, I decided to choose this one, not that one. ठीक है, बार बार याद, सब जैसे बाणी पढ़ते रहते हैं, बार बार याद आ भी जाती है सौखी, फिर सानू कोई ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना पैंदा. ठीक है, ठीक है. सो ट्रुथ इज द बिगेस्ट वर्च्यू. व्हाट इज ट्रुथ? आई आस्क टू मेनी क्वेश्चंस, बट दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ लाइफ. वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स, व्हाट इज ट्रुथ? यदि एक चीज याद रखियो, बाकी तो तुम पता है, वैसे पता है तुसी बोल नहीं रहे हो अजय अभी, मतलब आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट इंटरेक्टिंग. लास्ट टाइम देयर वर स्टूडेंट्स हु इंटरेक्टेड वेल. ओके, आई वांट ऑल ऑफ यू टू इंटरेक्ट प्लीज विद मी. वी हैव जस्ट 10-15 मिनट्स विद अस. ते इंटरेक्शन नाल ਅਸੀਂ वो ज्यादा लंबा समा एक वो रहती है ना, रिमेंबरेंस. अच्छा, सो ट्रुथ, व्हाट आई थिंक इज truth is what prevails forever. छोटी जी डेफिनेशन, मतलब जो मैनू जे मैं भावे बाणी का आधार लेना, भावे उदा भी लेना, truth is what prevails forever. जो रहेगा, बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा. ठीक है ना, everything which is not truth will not remain. ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਵੀ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਬੋਲੋਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰੇਗੀ. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈਨਾ, ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਔਰ ਇੱਕ ਝੂਠ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 100 ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਇਟ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਮ ਆਊਟ. ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, कोई कदे भी लंबी देर तक झूठ रहा नहीं. तुसी एग्जांपल्स फाइंड आउट करने की कोशिश करना. ओके, सो ट्रुथ इज व्हाट रिमेन्स फॉरएवर, व्हाट प्रिवेल्स एक्चुअली. ते गुरु साहब ने तो सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट सच दी गल शुरुआत तो ही जपजी साहब तो लैके गुरु ग्रंथ साहब के सारे पन्नियां ते सच दी गल. तकरीबन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट प्लीज, मतलब मैं उस तरह मैं जनरली मेटाफोरिकली आई एम सेइंग, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सच दी ही गल, सच तो शुरुआत है ते सच ही है बस जेड़ा अल्टीमेट रहना. ठीक है, सो एक बिगेस्ट वर्च्यू इन लाइफ. जदों ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਝੂਠ ਬੋਲਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਸੀ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਸਟ वर्च्यू you should intake.
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जिहड़ा वर्च्यू है जिहड़ा मैं समझदी हां कि ऑल ऑफ अस मस्ट ट्राई टू लिव विद इट इज डिटैचमेंट एंड डिपैशनिंग। ठीक है ना, हुण एक सच्चाई दे नाल ही लिंक्ड है कि आपां सिर्फ उहदे नाल जुड़ के रहिए ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਟਾਈਮਲੀ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਇੰਜੋਏ ਦੈਟ, ਬਟ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇਨ ਡੈਪਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰੀਡ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਸੋ we need to keep ourselves detached and depassionate। depassioning ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ that we forget the actual truth of life। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। again that is important virtue। what is that? detachment and depassion। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਰਚੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ तो फिर ऑटोमैटिकली ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਚੂ ਹੈ, ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ ਨਾ, that is a virtue as well as an outcome, दोनों चीजें ने कुछ ऐसे हैं। फिर एक important virtue है courage। all of us need to have courage to tell the truth। सामने साढ़े कुछ हो गया, साढ़े सामने मेरे क्लासमेट ने चीटिंग कर ली है, ठीक है, इट्स नॉट कि तुसी शिकायत लगाने चले जाओ, बट इफ इट is definitely going to affect the whole class। what will you do if such thing happens? if we don't say the truth, if we don't say anything about that, don't say the truth, we are encouraging the person who is not doing right। am I right or not? So here we need courage to face the truth of life। that is a very important virtue all of you must adopt। ठीक है, उस तो बाद और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है काइंडनेस एंड कंपैशन, हेल्पिंग अदर्स, बीइंग काइंड, बीइंग एम्पैथी। वर्ड सुने हैं तुसी कदे? व्हाट इज एम्पैथी? व्हाट इज एम्पैथी? To understand others' feelings। yes, to putting ourselves in others' shoes। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुसी, अंडरस्टैंडिंग अदर्स। जदों सानू ये चीज आ जाऊगी वेरी इंपॉर्टेंट वर्च्यू, देन वी विल टेक राइट डिसीजंस। फिर ये नहीं होएगा कि नहीं बस बिकॉज आई एम एंग्री मैं कुटता, इस तरह नहीं होएगा। वी विल बी एम्पैथेटिक। दिस हैपेंस, इट कैन हैपन फ्रॉम मी, इट कैन हैपन फ्रॉम एनीवन। सो बीइंग एम्पैथेटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो अपने आप ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਈਂਡਨੈਸ, ਦਇਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਹੈਲਪ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਵਰਚੂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਐਂਡ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਵਰਚੂ which all of us have to adopt। then important one is ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, and very important one, introspection। you know what is introspection? self-analysis, yes, knowing yourself। okay, बंदे खोज दिल हर रोज वो सी कितना बाणी पढ़ी जानी है, फिर वो अपने आप ही हो जाना वो प्रोसेस। ठीक है ना, बट that will do उस जिन्नियां वर्च्यूज दी ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ those who are present, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ SWOT ਐਨਾਲਿਸਿਸ, I will teach you how to do your SWOT analysis। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, we have to do it after let's say 6 months। after 6 months you do your SWOT analysis where you stand now, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। human being is always changing, always transitioning thing। human mind, we keep on changing, we keep on learning, because we keep on learning। ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਲ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, but we keep on learning, so we keep on changing। ठीक है, सो SWOT एनालिसिस हर 4-5 महीने बाद 6 महीने बाद अपना करना चाहिए सानू एक बार। SWOT एनालिसिस की होता है? स्ट्रेंथ्स,
weaknesses, opportunities and threats. Now you know that, है ना? पहला ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲੇ, we know that. ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਟਾਈਪ ਸਕੁਅਰ ਉਹ ਬਣਾते ना ग्राफ वांगू x y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ, है ना? ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਈਦੀ ਹੈ। and the plus part is x ਜਿਹੜਾ positive x and positive y ਵਾਲਾ part strength ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। strengths, weaknesses, opportunities, threats ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, but not an issue, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ? the important part is what we write in it. so strength ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ virtues ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ, ਹਜੇ ਇਹ adjectives ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਿਸਟ। so you have to list down, then you have to see out of ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ strengths ਨੇ but ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ weaknesses ਹੈ and you have to work on it। ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ opportunities create ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ so you need to adopt it, and ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ threat ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, again you have to deal with it। so weaknesses, opportunities and threats, all three are the virtues which you have to work on, and strength is what you already have, which you have to maintain, which you have to keep safely inside you, not to let anyone tamper with it, anything tamper with it। बहुत life ਦੇ ਵਿੱਚ changes ਆਉਂਦੀਆਂ, circumstances ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, so then you have to keep your virtues। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ virtues ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ in a locker inside you। that is the most important part, okay? so ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ virtue ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੱਸ quarter to 11, so we have 15 minutes almost, and then we'll do one more game, okay? so एक important ਹੋਰ virtue ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, obedience। why is this important? why is obedience important? there was some time back there was a student who asked me why obedience is important। I think ਜੇ ਮੈਂ obey ਨਾ ਕਰਕੇ follow ਨਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂ I may be right। what do you think? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? obey ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੰਨ ਲਓ, disobeying is ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ why will I always obey? I may be right, the elder one may be wrong, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ? ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ you may be right, I don't argue with you, but there is one thing, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ while obeying whom we are obeying, that is very important। are you getting my point? ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ obey ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। if there is a person, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਅਲ ਗੁਰੂ obey ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ that is always right, we may be wrong, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇ ਆਫ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਵੇਵਰ ਆਫ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਟਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। so we need to obey। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ obey ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? that is very important। if you think that you know ਉਹ person ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ 10 ਗਲਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ obey ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ, then you can say ਕਿ ਨਹੀਂ this is right, this is wrong, then you can say, then you should have the courage to say that। clear? so obedience has a particular angle to it, याद रखना है, ठीक है? okay so ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਰਚੂ ਹੈ, ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ। what is humility? ਇਹਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਐਂਗਲ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹੀਏ ਤੇ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ? ਸੁਣੀਏ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਇੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਹਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। what will it lead to? egos in my life, okay? egos in my life will lead to
finally destruction and complexes हो गए. ਜਦੋਂ when we take egos in life, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਚੀਵ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ. Are you getting my point? So we have to get rid of them. That I'm the only one who can do this. We have to get rid of them. Seriously. ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਬਸ. Okay? So ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ being ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਵਰਚੂਜ਼ ਆਨੇ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ that all of us are same, ठीक है? Everyone is unique. Each one of us is unique, having a unique learning, having unique experiences. We can learn from each other. It's not that I am the only one doing this. देखो मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ, you are already knowing it. Am I right or not? It is just कि ठीक है आप ਉਹਦੇ ਤੇ thought process कितना का लगाया सी या नहीं लगाया सीगा. I am not sure क्योंकि पहले ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ experienced people, they are already teaching you. You know so much already. I may not be knowing that. Seriously. And this is not what I am saying it as a formality to show off. It is a reality I believe in. It should be the reality I believe in. Okay? Then only it will work. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਐਂਗਲਸ ਹੈ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਦੇ. Sometimes we just show humility to protect our egos. ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, we don't have to grab that kind of situation. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਗੋਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ just to put a mask on it, we show humility to others, which we don't believe actually. ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾਥ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਚ ਜਾਣਾ. You will find yourself lost after some years. Okay? Be truthful to yourself, whatever it is. Ego, yes it is, I will now get rid of it. Okay, it's okay. Okay? This is how ये virtues सारी इस तरह ही हैं. ये नहीं है कि ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ yes I am peaceful, I am contented, I am truthful, I am this, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲਏ then we are lost. Okay? और ये सब ਤੋਂ important ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ. कसवट्टी ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ. ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕੀਆ at what level I stand, that will be important. No human being is going to serve me anything. ठीक है? So वो चीज आनी बहुत जरूरी है. Then most important and I think the last one I will be talking about is integrity and honesty. So begins with it also has many angles, beginning with honest, being honest to yourself first. सब तो पहला था अपने आप नाल ही honest होना पड़ता है, and then we learn to get honest with others. Then our integrity always pays. This is very true. जिन्हें भी लिखी है it will always pay something. तुझे आजमा के देखना है. So we should be. चीटिंग दे आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੌਰੀਡੋਰ 'ਚ ਚੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਬੀ ਲੱਭ ਗਈ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਪਏ ਹੈ. What will you do? You could not study your whole year due to certain reason. Now what will you do? You will find yourself ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਚਾਬੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ. And you stay in a hostel and you have close access to the room. What will you do now? I am improving the situation at every step. And what will you do? Will you be able to give? अच्छा हो तो सी वो चाबी वापस देने चले जाओगे. What will happen? फिर तो सी फिर मैंने याद करना वो मैंने चित्तर पा के बयान करने से integrity will pay. है ना? Sometimes happens. But still I will stick to my point, integrity will pay. Right? So you have to be honest and integrity. Why that? Of course you will be lose on नहीं आंदा पेपर तुसी फेल भी हो गए. फिर तुसी उस तो बाद की करोगे? Will you remember कि गलत पाथ लिया सी कि सही लिया सी? Will you be sticking to your point कि बिल्कुल वो पछता लोगे कि काश मैं चाबी खोल के ते क्वेश्चन पेपर देख ही लेंदा. ਇਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਡਾ what will happen?
Until that level, you have to be honest with yourself. And believing in this one line, integrity will pay. One day. एक बार fail हो जाओगे ना, काम क्या होगा? Integrity will still pay. This is what you have to believe in. Okay? एक ना कदे Google करोगे, you will find a few blogs and few sites. इतने ethical dilemmas हैं आंदे. इतना ने question जिस तरह मैं तो एक question पूछा हूँ. So you will find a number of questions shared by many people, where they have found themselves in such a dilemma. What to do, what not to do. Right? वो the question छाड़ देता है, and then you have to decide it for yourself. That will help you out in doing your SWOT analysis. That. Okay? So you need to find out those questions. वैसे ही Google की करना वैसे तो साडी लाइफ ही Google है. तुसी हुणे सोचोगे अपनी लाइफ च कितनी बारी तो इदां दी फेस करनी भी पई होएगी. ऐसी गल नहीं है. Each one of us have faced this kind of situation where either we have chosen to be honest or not to be honest. That is our decision, and we are going to face this in life. Clear? So honesty is such an important thing. Right? Okay. So वैसे भी एक चीज तो सारे को पता ही है कि सानू लगता तो हैगा कि सानू कोई देख नहीं रहा, but there is always someone watching. परमात्मा ते है. We are here, all of us जिधे इतने बैठे हैं घट्टो घट्ट, we all are in this belief. Yes, we have चौगिर्द हमारा राम का है ना, सारे पासे है ना. तो उन्होंने फिर जैसे फील करके ही चलना है, फिर तो सारे को होना ही वैसे. Right? Okay. So, not taking much of time, you will अभी जितने जिन्नियां मैं बच्चों से गल कीती है, तुसी अपना वो strengths मतलब सिर्फ दो करो, सिर्फ 2 strengths, 2 weaknesses, 2 opportunities and 2 threats. Try to do. And then I will just end my brief lecture. With this, I would like to thank all the trust members, and मैं मेरी again a request to all कि next time please let me sit on that side. I still find myself more comfortable there. I'm not deserving to be a part of such what बुद्धिजीवी ethics experts बैठे हैं. I don't think I deserve any equality. Thank you. वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह. We keep on doing this. बच्चों, we just heard Dr. Rupinder Kaur, who is a professor in Punjab University. ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ. Dr. Saab talked about professional ethics. Dr. Saab talked about professional ethics. ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ virtuous life ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ. And the very basic question is ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼? And she started with a very, very simple example of 9 dots, how to connect them. And she taught us in an indirect way कि ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ out of the box think करके ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ solutions ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. We have to think out of the box to find certain solutions, difficult solutions in life. And once ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ. I think ਜਿੰਨੀ virtues
डॉक्टर रुपिंदर कौर जी ने एक्सप्लेन कीतियां, इस तो सिंपल तरीके नाल कीतियां नहीं जा सकदियां सी। She came, why should we lead a virtuous life? ਜਦੋਂ दो राह हैगे ने, एक सौखा है जिहदे च बड़ा ऐश आराम सब कुछ नजर आता है, दूजा औखा है, फिर भी असी उस औखे राह ते क्यों चलना है? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। कि although the path ਜਿਹੜਾ difficult path है, वो ਸਾਨੂੰ लगता है कि difficult है, पर ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ उस राह ते चलते चलते ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ सुख मिलते हैं। और ਜਿਹੜਾ राह एक्चुअली ਸਾਨੂੰ लगता है कि बड़ा सौखा है, इस बड़े ऐशो आराम है, वो ਸਾਨੂੰ पतन की तरफ लेके जाते हैं। She talked about the various virtues, starting with truth, सच, सत्य, जो सब तो बड़ा ट्रुथ है, जो सब तो बड़ी वर्च्यू है, वो है सच्चाई, अटल सच्चाई। She talked about detachment, she talked about courage, courage to face the truth, to stand up for the truth, to stand up for righteousness. She talked about kindness and humility, sympathy, kindness, compassion, empathy, humility, obedience. ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। और पर इसी चीज ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ और बड़े सिंपल तरीके ਨਾਲ एक्सप्लेन ਕੀਤਾ ਹੈ। कई फैसले साडे ਹੁੰਦੇ ਨੇ जो साडी जिंदगी ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। तो कोई फैसला ऐसा नहीं लेना चाहिए कि बाद जाके सानू पछतावा होवे। And that is the importance of leading a virtuous life. I once again like to thank Dr. Rupinder Kaur ji for taking out a valuable time और साडे नाल अपने विचार शेयर करन दे। We are indeed very lucky वो साडे आए सानू और अपने विचार साडे नाल साझे कीते। We now have a 15 minute का tea break, after which we will resume here. Please settle down after 15 minutes. I would also request, उस तो पहला I will request our senior trustee to give a saman chint to our speaker. मनमीत लैपटॉप करिए कनेक्ट। हाँ, पहले